Hello students, today I am going to talk about reading comprehension or RC. RC is a very important topic which always appears in the syllabus for English language proficiency test for several competitive examinations. Students, in this series of 2 video lectures, I am going to talk about certain techniques or methods or I should say some smart strategies which a student should follow to attempt the questions based on RC with maximum accuracy. But students, before discussing these strategies or the methods which are to be followed to solve these questions, let's have an introduction with the concept of comprehension. First, we should try to understand that what comprehension is all about. Students, the literal meaning of the word comprehension is the ability to understand. And as an ability to understand, comprehension in language learning includes an organized process. And this organized process operates at 5 levels. Number 1, correct association of meanings with word symbols means the comprehension takes place when we associate a particular meaning with the word symbols. Then the second level is the selection of correct meaning, because a word sometimes has several interpretations, several meanings. So to get a better understanding of the given passage, we have to be extra careful about the selection of correct meaning. Now the question arises, how can one select a correct meaning? So students, here context plays an important role. We have to take care of the context in which the author or the writer of that passage is writing or speaking. Then comes the third step. Here we have to organize and retain the meaning, means the meaning captured or grasped at the opening of a passage should be retained, should be kept in mind to relate it with the further proceedings or the further details or descriptions which are given in the passage to reach at the complete meaning. And fourthly, this ability to understand or the ability to comprehend works through a logical way, that we get some knowledge or some understanding of that given passage into pieces, and we have to arrange or we have to look at those very those pieces of knowledge in a very logical way. And only then we will reach at the last step, that is to grasp the meaning, means we have to reason, we have to logically move through the smaller idea segments, we have to make a logical move through the chunks of knowledge or the pieces of knowledge which we have gathered after reading that very passage to grasp the overall meaning of that very written piece of work. So, students, the fact remains that comprehension is the ability of processing a text, understanding its meaning, and integrating it with what we already know. So, students, इस तरह से comprehension का मतलब है हमारी समझने की ability, हमारी समझने की क्षमता, और language learning में comprehension या reading comprehension से संबंधित जो exercise है वो बहुत ही एक organized process के रूप में है, एक बहुत ही संगठित एक प्रक्रिया है which works on 5 levels, जो 5 स्तरों पे काम करती है. नंबर 1, हमें किसी एक written text हमारे सामने है तो हमें उसके साथ उन written words के साथ एक सही meaning associate करना होगा, तभी हम उसको समझ पाएंगे. अब सवाल ये उठता है कि सही meaning को कैसे चुना जाए, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा अबाउट द कॉन्टेक्स्ट कि किस संदर्भ में किसी खास सेंटेंस या वर्ड को राइटर यूज कर रहा है.
एंड द थर्ड कम्स कि हमने किसी पैसेज को पढ़ा, उसके ओपनिंग, मिडल और क्लोजिंग में जो जो मीनिंग्स हमने ड्रॉ किए हैं उन सारे मीनिंग्स को हमारे माइंड में लॉजिकली अरेंज करना होगा, तभी हम एक उस पैसेज का कंप्लीट मीनिंग और ओवरऑल मीनिंग ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन हमारे समझने की क्षमता का परीक्षण होता है, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में एक्सरसाइजेज होती हैं। Now let's see how this reading comprehension exercise appears in our question papers. Students, what happens in your question paper? A comprehension exercise is there. It consists of a passage upon which questions are set to test the student's ability to understand the content of the given text and infer information and meanings from it. Means if you look at the reading comprehension in your question paper, it appears something like this. Read the given passage carefully and answer the questions given below. So in the question paper, what is expected of you is that a passage is set with questions on it, and you are to read and understand the passage to answer those questions with accuracy with the help of relevant information which you have gathered from the passage itself. So now, for answering those very questions with maximum accuracy, we have to train our brains, we have to train ourselves to understand that which type of questions will be asked. So when we have a clear understanding of the type of the questions, only then we can approach that very particular text to get certain sort of knowledge which we need to answer those very questions. So students, generally the reading comprehension exercises in your question paper includes these 4 types of questions. Number 1, main idea based questions or direct questions. These are the questions about the central idea, about the primary purpose of the passage, that what that passage is all about. Then secondly, there are some inference based questions. These questions are based upon the meaning of a particular phrase or the sentence which is given in that very sentence. There may be some questions about the true or false statements. And the third type of questions are the questions based on tone and style of the authors. These very questions are about the attitude or the mood of the author for the given topic which is discussed in that passage. And fourthly, there are vocabulary based questions where you are asked to write the antonyms or synonyms of certain words which are either underlined or written in bold in the passage which is given in the question. So students, in this reading comprehension exercise, you are supposed to answer these 5 types of questions. And to answer these questions with maximum accuracy, students, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित एक्सरसाइज को सक्सेसफुली और हल करने के लिए हमें उसमें जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी समझ होना जरूरी है. जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. नंबर 1, मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि जो आपका पैसेज है उसके मुख्य विषय वस्तु या केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया पे आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नंबर 2, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन अनुमान आधारित और निष्कर्ष आधारित कि उस पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ने के बाद आपको किसी एक वाक्यांश, फ्रेज या सेंटेंस का मीनिंग लिखने को कहा जा सकता है कि आप उससे क्या समझते हैं, उस पैसेज के आधार पे उस सेंटेंस का क्या मीनिंग है. या कई बार उस पैसेज से संबंधित ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स दी होती हैं, तो उस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको बताना होता है कि क्या वो स्टेटमेंट उस पैसेज में दिए गए जो तथ्य हैं उनके अनुसार है या नहीं.
और तीसरी जो कैटेगरी है क्वेश्चंस की वो ऑथर के मूड और उसके स्टाइल पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि जो ऑथर का रवैया है किसी पर्टिकुलर विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कि क्या वो उसके प्रति सैटिरिकल है, आलोचनात्मक है, उसका मूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। या कई बार भाषा के प्रयोग, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। और फोर्थली वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपके शब्द ज्ञान को परखा जाता है। ये क्वेश्चंस आपको पैसेज में कुछ एक वर्ड्स कई बार अंडरलाइन किए होते हैं या बोल्ड में लिखे होते हैं, या क्वेश्चंस में वैसे ही आपको लिस्ट दे दी जाती है, आपको कुछ वर्ड्स का के एंटोनिम्स अपोजिट मीनिंग लिखने होते हैं, कुछ के सिनोनिम पर्यायवाची समानार्थी शब्द ढूंढने होते हैं, या कई बार कुछ एक वर्ड्स पैसेज में से दे दिए जाते हैं और आपको उन्हें अपने शब्दों में प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से 4 टाइप हैं क्वेश्चन के जो जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज में आते हैं। So students, to answer all these 4 types of questions successfully, we have to work through a strategy, and that strategy requires concentration on the part of the student, because if we will concentrate fully while reading that very passage, only then we can get clarity of meaning. And now, while concentrating and while getting the clarity of meaning, we have to be extra careful about time budgeting, because in the question paper you have a fixed time, so you have to complete that very exercise, you have to understand, you have to answer the questions based on those very passage in a fixed time. So for a successful attempt while solving the questions of reading comprehension, these 3 things you have to keep in mind. So to concentrate, to get clarity of meaning, and at the same time keep in mind the time budgeting. We have to be smart enough to follow an organized method, an organized process while answering these questions. So in the next video we will talk about what are those smart strategies that we should follow while answering these questions. So students, इन सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करने के लिए हमें कंसंट्रेशन चाहिए, हमें क्लैरिटी ऑफ मीनिंग चाहिए, और साथ ही साथ हमें टाइम का ध्यान रखते हुए इस एक्सरसाइज को पूरा करना है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी, तभी हमारा अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो इन स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। That's all for today. Enjoy reading. Keep reading. Thank you.